YouTube लाइव सेशन में आज डिस्कस करेंगे निफ्टी एट 20,000. इट मस्ट बी फंडामेंटल्स ओवर फोमो. वेल, इस समय ट्रेडर्स और स्पेशली इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है. इज 20,000 निफ्टी टाइम टू गेट आउट ऑफ द मार्केट्स? आफ्टर ऑल पास्ट देखें तो यही हुआ है. जब भी मार्केट्स में बहुत तेजी से उछाल आया है, इट एंडेड विद ब्लड ऑन द स्ट्रीट. इस सवाल के जवाब के लिए आपको पहले ये पूछना होगा कि आप क्यों रुकना चाहते हैं. ये याद रहे कि किसी भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखना इस पर डिपेंड नहीं करता कि इंडेक्स हाई है या लो. It is about how the stock fits into your long-term plan. What are the prospects of this story? And finally, whether you have a better plan to use the liquidity. वैसे भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेंसेक्स ने पिछले 44 ईयर्स में 17.4% रिटर्न दिए हैं. आजकल जब मार्केट नए ऑल टाइम हाई पे है तो इन्वेस्ट करना या बेचने का डिसीजन सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. There are the fundamentals, which may be strong and induce the investors to hold on. The argument is that India is still a great story. Consumer demand is still robust and the Indian GDP is likely to go from $3.5 trillion to $5 trillion in 7 years. Obviously, the India story cannot go wrong in such times. That is what fundamentals is all about. ये reality में काम भी कर सकता है और नहीं भी. लेकिन फिलहाल हम इस डिबेट को बाद में करेंगे. वहीं दूसरा फैक्टर तो ज़्यादा खतरनाक है एंड कैन एक्चुअली बैकफायर. इट इज़ कॉल्ड फोमो. वेल, ये इतना ट्रेंडिंग वर्ड है कि इससे सब फेमिलियर होंगे. फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट. फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स जब सूरज चमक रहा होता है तब मार्केट की ऊंचाई पर जाने का समय होता है. ये बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप ऐसे ही बैठे हुए हैं और आपका नेबर मार्केट से मुनाफा कमा रहा है. That is a fairly dangerous approach and a bad reason to buy or not to buy stocks. But obviously, market-related decisions, fundamentals, factors को देखते हुए लेने चाहिए, न कि फोमो के थ्रू. बल्कि यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए बिफोर टेकिंग सच अ कॉल ऑन वेदर टू होल्ड ऑन और बाय और सेल आउट व्हेन निफ्टी एंड सेंसेक्स आर एट पीक लेवल्स. फर्स्ट, डू यू रियली नीड द कैश? अगर आपने किसी स्टॉक को काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है और उससे अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है तो इसे बेचना और प्रॉफिट्स को कैश में करवाना एक सही ऑप्शन हो सकता है. बट से अ स्टॉक लाइक कोटक बैंक दैट कन्वर्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 into ₹350 crore over 38 years. How do you really decide it is time to exit such a stock? One question to ask is whether you really need the cash at this point of time. Yes, liquidity is one part of the story, but that is not only what the need for cash is all about. Obviously, you don't want to sell a multi-bagger and use the money for your creature needs. That is bad financial planning. You want to invest in another asset that can multiply in value over time. If you don't see such opportunities, rather stick to your holdings rather than trying to sell out and then wonder what to do with this cash. Second option है financial plan fit and portfolio rebalancing. This is the second strong reason for you to exit a stock at high levels in the market. For instance, if you are overexposed to bank and your allocation is 20% more than the Nifty allocation, it is time to adopt course correction. In such cases, selling out of a bank has a logic to it. The other issue, whether it is essential to sell the stock as part of your routine portfolio rebalancing. You rebalance your portfolio for various reasons. Stocks could have rallied too sharply, or some of the stocks may have been too good to be true, or in some cases, your goals may have changed. In such cases, it is best to allow the stocks to leave your portfolio based on the valuation assumptions. Here again, the consideration cannot be FOMO, but purely based on your own financial planning. Third and the last point, what if you are confused with the market? The funny part about the markets is that investors tend to be ambivalent when they need to take a stance. Here again, there is a simple rule to follow. For instance, if you plan to exit after making a good profit, you have a choice between further maximizing profits and minimizing current target. The former option is uncertain, while the latter is certain. ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और उस स्टॉक को बेच दें. इससे आप अपने रिग्रेट को कम कर सकते हैं. रिग्रेट करने से अच्छा है कि कुछ प्रॉफिट के साथ सेलिब्रेट करें.
है ना। लेकिन हाँ, कोई भी स्टॉक पहले बेचने से पहले दो बातें क्लियर रखें। Firstly, how are you going to put the money to investment use? And secondly, how much would you lose by way of taxes? Once you have an answer to both these questions, the decisions become easy. तो इस पूरी स्टोरी का मॉरल यही है कि आपका डिसीजन पहले आपके गोल्स और उसके बाद फंडामेंटल्स को देखते हुए होने चाहिए। और हाँ, फोमो को इन सब के बीच में न आने दे। कैसा लगा आपको आज का लाइव वीडियो सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लिंकएक्स एंड स्टे अपडेटेड।